Good evening, everyone. Thank you all for joining. Hope I am visible and audible. Thank you all, guys. You can have a chat. You can write the chat box. I will be happy to answer your queries or listen to you. Probably. So this is Rishabh Kale. Sorry, I forgot to mention. This is Rishabh Kale, founder of RK Advisory and an ex-analyst, ex-fund manager, HSBC. So I've been working into the stock market for the last 8 years, both on the buy side and the sell side. I have been into this industry, equity research, or you can say investment banking for the last 8 years. Currently, I own a company named RK Advisory, where we help students to get placed into core finance role. So this initiative is for the purpose that being a professor. Okay, now I left my job somewhere around 2022-23, and what I found out is I started teaching. I started teaching equity research to in colleges, and taking few sessions. So I was a professor at Wellington Institute of Business Management, Mumbai. So those who are from Mumbai might be knowing this institute. So it is one of the top institutes in Mumbai. So I was teaching there, and now currently I'm in Pune, where I also go to various colleges in Pune, including the Pune Institute. So what I found out, while teaching to the students is that, see, my purpose was to teach you research, but the problem is I understand that the people are not understanding the basics of finance. Now, there are people who might have clear NISM exams, research analyst exam, but still they don't understand how to use this in practical world. So now there are people who have not even cleared the NISM research analyst exam. So being in finance, this exam is to be cleared. It is like a license. It will not guarantee you a job, but probably if you have not done it, you will not even, your CV will not be even get selected. So ideally, this was our when we used to hire people or hire candidates, freshers. NISM was the basic criteria. At least itna to aana hi chahiye. If that is not clear, probably you will your CVs get rejected. See, because I have one intern I have kept from my college where I teach. So he is working with me, and the problem is the basics are very wrong. He बोलता तो है कि मैं finance वाला हूँ, but when it comes about basic understanding, वो उसको वो ही नहीं आ रहा है. And I told, did you give research analyst exam? He said, I gave, but I failed. मेरे colleges में students हैं जिन्होंने clear भी नहीं किया है. So if I ask you, any one of you have cleared the exams already? If yes, you can write in the chat box that you have cleared it. Okay, Vedant have cleared. Anyone? All, I hope others haven't cleared. Okay. Preparing but not yet. Okay. I had cleared module 5A. Okay, 5A is fine. It's okay. Preparing. Okay. Achha, now the entire preparation, 2 weeks, probably I'm saying 2 weeks, but it can go to 3 weeks, 3-4 weeks. So now what is the problem? Achha, see, in finance, when I was hiring specifically for core finance role, equity derivatives is okay to clear. Then currency derivatives is the one that is required into investment banking. So that is, I think, 2 or 3. I don't remember the name. Remember the number. Research analyst 15 is the most important, and advisory, research analyst advisory A and B, 10A, 10B. Investment advisory 10A, 10B. Now, these are the 4 to 5 NISM certificates that need to be cleared before you pass out your MBA. या फिर internship को भी जा रहे हो, if you are in the first year BCom में हो, तो probably ये सब exams clear करना, which is very important. If not, so there will be a problem in your CV is getting selected or rejected. Wait 1 second. I think there is some light issues. 1 second, wait. Yeah, sorry. Yeah, so there is an issue with this. If you don't do this exam clear नहीं करते तो एक problem हो जाएगा. Even I tell my students कि exam clear होना चाहिए. If you are a CFA, CA हो, तो वो exam clear करने में time नहीं लगता है. अच्छा, now while preparing it, see, the mindset is important, because when we give exams, जब हम exam देने जाते हैं, जब हमारा वो renew होता है, तो renew करने जब जाने का मैं, तो हम पढ़ के नहीं जाने के. It's like कल अगर मेरा expiry हो रहा है, तो हम वो शाम को एग्जाम देके आने के, बिकॉज वी आर सो बिजी वेल डूइंग रिसर्च, तो वहां पे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती.
But when I started teaching into colleges, so it's been around 3 years that I've been teaching into various colleges, MBA colleges. What I figure out that basics are very bad, guys. तो जब तक तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं होता है, क्योंकि ना ऐसे ऐसे चीजें हैं जो फाइनेंस में कि तुमको अगर रात को उठ के पता गया कि ईपीएस क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होता है, पीई क्या होता है, प्राइस टू बुक क्या होता है, ये तुमको पता होना चाहिए. इवन इफ आई कॉल यू एट 12 am in the night. Okay. Now there are topics. Okay, I will share something. There are These are the weightage. If you अगर तुमने NISM की बुक्स पढ़े होंगे तो these are the weightage of the topics. So ये introduction ये तो काफी basic है. Fundamental research. अच्छा, as an analyst, basically we focus on company analysis. ये होता है एक, obviously it is the top. फिर उसके बाद कंपनी के साथ साथ वैल्यूएशन भी आता है. उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स. इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक गोज हैंड इन हैंड. पहले इकोनॉमिक एनालिसिस होता है, फिर इंडस्ट्री एनालिसिस होता है. फंडामेंटल रिसर्च भी ऑफर, इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस. तो प्रोबेबली कंपनी एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, सॉरी कंपनी के साथ साथ इट गोज टू वैल्यूएशन. ये होता है. सो आई टेल यू हाउ विल गो. कॉर्पोरेट एक्शन बीच बीच में आई विल टेल यू व्हाट आर द कॉर्पोरेट एक्शंस थोड़े बहुत. के बाद देयर इज वैल्यूएशन हो गया. एंड देन there is something called economic and industry go hands in hand. Then फिर उसके बाद ना ये फंडामेंटल्स ऑफ कमोडिटी आता है, which is not that much value, but ये एक बार पढ़ लोगे हो जाएगा. फंडामेंटल्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, हाँ ये थोड़ा पार्ट है अबाउट हाउ यू कैलकुलेट रिस्क, CAGR, IRR, NPV. Now this is totally theory. अभी ये मैंने इसका एक PPT बनाया है that I will share with you while teaching. तो वो theory session होगा तो थोड़ा boring होगा at times. And technical analysis. This is nothing to do with the fundamental analysis. So while I'm being a research analyst, so I will keep this aside and I will open a blank Excel. We will get the PDF views during this course. PDF, हाँ ये मैं हाँ I will share. Yeah, I will share the PDF. But obviously it will not be downloaded. You can, I will share in a drive. तो वहां से तुम ले सकते हो. So I will open a Word file, a blank Word file. अच्छा गाइस, आई एम यूजिंग 2 स्क्रीन्स. अगर कुछ दिख नहीं रहा तो बताना. आई माइट क्योंकि एक दो स्क्रीन्स है तो शायद से उधर उधर दिख रहेगा. आई एम ओपनिंग ब्लैंक एक्सेल, है ना, ब्लैंक एक्सेल. ओके रेडी गाइस. सो मैं बोल रहा हूँ 2 weeks, बट सी व्हाट आई वांट एन कंटिन्यूअस इंटरेक्शन, कि तुम इंटरेक्ट करते रहो हमारे साथ. तो सो विथ मी, सो दैट व्हाट हैपेंस, कभी कभार कोई प्लेसमेंट्स की आते हैं या कोई रेफरल की बात आते हैं तो आई कैन रेफर यू. या मुझे पता तो है ना, दिस स्टूडेंट्स था जो ना सीरियसली था, पढ़ रहा था. यू कैन फॉलो मी ऑन लिंक्डइन. आई थिंक मेनी ऑफ यू आर फॉलोइंग, बट यू कैन फॉलो मी. आई कीप ऑन पोस्टिंग. तो अभी ये ग्रुप्स में भी आई विल कीप ऑन पोस्टिंग सम जॉब्स. ऑब्वियसली आई सी गाइस, कैसा होता है ना, रेफरल में डायरेक्टली नहीं रह सकता, बिकॉज इफ आई डोंट नो यू प्रोबब्ली आई कैन नॉट रेफर यू, बिकॉज आई एम नॉट इन द इंडस्ट्री नाउ. मैं अगर क्रिजिल में होता एग्जांपल एंड तुम बोलते सर रेफर करो, तो प्रोबब्ली आई वुड हैव शेयर्ड योर सीवी. बट रेफरल से ना कुछ होता नहीं है. इफ यू आर आई विल टेल यू, तुम जो मांगते हो ना लिंक्डइन पे, सर रेफरल दो, पॉसिबली रेफरल नहीं होता है. इफ यू वांट टू मेल समवन कि मुझे रेफरल चाहिए, तो देयर इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट. सर आई हैव डन माय MBA, आई हैव डन माय CFA, जो भी इतने सारे डिग्रीज मैंने किए हैं, मैंने ये प्रोजेक्ट्स पे काम किए हैं. And if you think that, sir, these projects are aligned with the job role that you have posted, we'll be happy to share the details. Here is my CV. ऐसा करके सेंड करना होता है. तुम बोलते सर प्लीज रेफर मी, यू सर प्लीज रेफर मी, प्लीज डू दैट. दिस विल नॉट हैपन. ओके Prithvi, okay, I can speak in English, but बीच बीच में if I talk in Hindi, let me know, Prithvi, if I don't understand anything in Hindi. Okay, so what happens is, this is how the courses. So this is how you should approach a recruiter. Yeah, approach and senior analyst. मेरे पास ना, I have so many messages which are unread saying that, sir, please refer me. I saw an opening, please refer me. See, core finance mein, if you want to get referred, you have to show your projects, and not one project that you have done in your college. It should be multiple projects. Because that day I posted some role for investment banking associate. नई मुंबई में अभी भी एक opening है available. नई मुंबई में. Now guys, tell me, now you are 80 students in the class. सबके CVs है. Whom should I refer? तुम ही बताओ.
एक ही ओपनिंग है. Whom should I refer? What do you think? तुम ही बताओ. For 80 students, on what basis will I refer you? All of my students, all of my students. Plus, there are students which I teach in the colleges. Correct? मैं 3-4 कॉलेज में सिखाता हूँ, वहां पे भी स्टूडेंट्स है. नहीं, the best one, guys. How will I select the best one? मुझे सिर्फ 188 मेल्स आए हैं. मेरे पास 88 मेल्स आए हैं. उसमें थोड़े बहुत है, सर. आई एम लुकिंग फॉर अ रोल. दिस इज माय सीवी. आई एम लुकिंग फॉर अ आई एम ऑलरेडी वर्किंग. आई एम लुकिंग आउट फॉर अ चेंज. दिस इज माय सीवी. आई एम इंटरेस्टेड इन द जॉब रोल. Yeah, Ankit is right. The ones who sends their project work. I'll tell you the mindset of a recruiter. See, skills ना सबके पास है, Himanshu. Everyone has skills nowadays. You ask financial modeling, people know how to make financial modeling. People know how to make equity research reports. So how are you different? How are you different from? So in my mentorship, I teach that only कि you don't have to be the same. मुझे रिपोर्ट लिखने आता है, मुझे ना मॉडल बनाना आता है, तो ये बेसिक है. Models, I have BBA students have been making models now. If you don't know, I teach in a BBA college. जहाँ पे I am teaching how to make a models. So do you think after MBA 2 साल you saying I am making models, so मुझे ले लो? Yeah, so research report writing and continuously writing. This is now there is a result season. Who is anyone is tracking? Result season चल रहा है. Infosys के results आए. TCS का results है. IT companies coming out with results. Hotel industries coming out with results. Have anyone tracked it? Have anyone see what is happening in the company? What is happening in the industry? क्या हुआ margins? How is the margin impacted? Margins बढ़े हैं, घटे हैं? Himanshu, if you are tracking, what is the proof? Show me your LinkedIn ID. Have you updated something? Have you made a report on it? Do you have financial models for those? Have you updated your financial model because result season is out? It should be updated. Whatever you do, tracking तो मैं भी track कर रहा हूँ. I am also tracking many sectors. What is the proof that guys I am tracking? I am tracking many sectors. 100 sectors I am tracking. What is the proof? And research reports, correct. And research reports तुमने तुम्हारे हिसाब से लिखा है. Do you have assigned it with someone? Do you have a authority कि सर ये एनालिस्ट है, ये एनालिस्ट के अंडर मैंने रिपोर्ट बनाया है, या ये सर है इसके अंडर में रिपोर्ट बनाया, ही इज ऑल्सो एनालिस्ट. लोग डालते हैं ग्रुप पे कि ना सर आई मेड अ रिपोर्ट, आई हैप्पी टू शेयर माय फर्स्ट रिपोर्ट. कुछ नहीं होता उससे. सबको आता है रिपोर्ट बनाना. Sir, this is the report I have been told to make, and this is I have made under a guidance of ex analyst. Yeah, I have made under this. He has assigned those report. मैं मेरे स्टूडेंट्स को ना बोलता हूँ LinkedIn पे. You must have seen मैंने एक उस दिन कमेंट डाल दिया कि this is not what I teach. Don't use my name in the report. सीधा बोल दिया क्योंकि he was not consistent to the class. आने का नहीं था, ऐसे कोई रैंडम रिपोर्ट बना दिया. So make sure you have that report, under someone कि someone will take, the possibility कि अगर तुम बोले कि रिपोर्ट खराब है, तो बोलेगा तुम्हारे सर ने तुमको खराब सिखाया या बराबर सिखाया नहीं है. यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ क्रेडिबिलिटी फ्रॉम समवन. और इस कोर फाइनेंस में जॉब मिलना इट्स बिट डिफिकल्ट, आई विल से. मेरे खुद को प्रॉब्लम्स हुए थे. ओके, अच्छा. नाउ बहुत हो गया टॉपिक्स. नाउ लेट्स गो ऑन टू द एनआईएसएम पार्ट. इफ एनी डाउट यू कैन रीच आउट. लिंक्डइन नंबर है मेरा, वैसे भी ग्रुप पे आई एम द ग्रुप एडमिन. यू कैन रीच आउट. ओके, नाउ विल स्टार्ट विद कंपनी एनालिसिस. ओके, एज आई टोल्ड यू, कंपनी में आई हैव अ पीडीएफ ओवर हियर. Company analysis, that is a financial analysis. Now, I like to ask questions while teaching. I get bored only teaching alone. So, now it will be a little basics. Those who have cleared the exam might get little bored. But, think from an analyst perspective, I will ask you something based on an analyst perspective. Even if you have cleared the exam, but how will you answer this question in interviews? Okay, I will expect those kind of answers if you have already cleared the exam. Okay, now the first thing is introduction to your financial statements. Okay, so I will put it over here. Introduction to your financial statements. अभी financial statement में क्या होता है? So we all know it is 3 financial statements होते हैं. P&L, balance sheet, and
कैश फ्लोस. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर ये तुमको फाइनेंस, और ये फाइनेंस ना यही है, दिस इज ओनली द फाइनेंस. इफ यू अंडरस्टैंड ऑल दिस, 80% chances that you will clear exam. छोड़ो, I am not teaching from an exam perspective. I am teaching this from a interviewer perspective. Exam तो clear हो ही जाओगे. It should not be a big deal. From an interviewer perspective, balance sheet. अच्छा, P&L, balance sheet, cash flows. Okay. Now in this, we'll start with. अच्छा, when you look at me, okay, let's say I am successful in life. Means what? If I talk in monetary terms, means what? Means what? I am successful in life. How do you judge me, guys? तुमको मेरा income तो पता है नहीं. How do you judge me? सोचो, मैं बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. Tell me, how do you, मुझे देख रहे हो ना, you can see me, correct? I am successful or not? How do you judge me? I have a car, good house, no 9 to 5 continue. वो ठीक है. Just looking at me, you don't know what am I doing. Luxury items you own, okay. Standard of living, fine. Mercedes class, अच्छा, okay, Mercedes. Sharing knowledge is fine. Knowledge doesn't have a value because there are professors who are knowledgeable than me. My friend is a CA CFA still doing 9 to 5. Okay, so knowledge का बात नहीं है. Based off standard of living, my appearance. अच्छा, attitude नहीं है. Appearance में we can see now the question I'm asking, something which has value. Mindset doesn't have a value, Arshita. Attitude doesn't have a value. Sharing knowledge doesn't have a value. और क्या, लाइफस्टाइल. हाँ, लाइफस्टाइल, इफ यू कैन मेंशन लाइफस्टाइल, मतलब कपड़े हो गए, गाड़ी हो गई, कार हो गई, करेक्ट? कैन से दैट. सो सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द बैलेंस शीट. हाउ डू यू हाउ डू यू रीड अ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी? सो फर्स्ट थिंग, एज यू राइटली मेंशन, इफ आई हैव मनी, शुड बी, तुमने बोला गाड़ी, घर, वॉच, नो, लग्जरी आइटम्स, करेक्ट? सो दैट इज योर प्लांट. हम अभी फाइनेंस टर्म में थोड़ा बहुत फाइनेंस पर प्लांट, because it is business, property, personal, and equipments. Correct? Plant, property, equipments में गाड़ी भी आ गई. First thing that you look in a company is the balance sheet is plant, property, equipments. अच्छा, ये करते करते I will also teach you ratios in between. I will not go as per the curriculum. I will go as per how I understood the balance sheet. Okay? So whichever question comes in the exam, you should be able to answer it. Whether it is which topic it is. मतलब ये टॉपिक में तो आने चाहिए, कंपनी प्रोफाइल, वैल्यूएशन, सोशल और रेशियोज, वो सब तुमको आने चाहिए. प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट्स. ओके guys, okay, if I say I have a car of 1 crore, I have a Mercedes of 1 crore, I have the house of 5 crores, मेरी घड़ी है 4 लाख की, I have a mobile phone of 2 lakhs, कुल मिला के मेरे 10 करोड़ के एसेट्स है. ओके कैसे लिए मैंने? हाउ डिड आई परचेज दिस? How did I purchase this? Income. हाँ, income, cash, correct. Cash. So can I say it can also be from a loan? ऐसा भी हो सकता है. सिर्फ इनकम थोड़ी होता है, लोन से भी तो ले सकते हैं मैं, करेक्ट ना? अच्छा, लोन आई विल स्पेसिफिकली मेंशन एज डेट. डेट को हम नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर भी बोलते हैं सर. यू ऑल्सो से एज डिबेंचर्स. ओके करेक्ट, बराबर. लोन, डेट, डिबेंचर्स, ऑल वन एंड द सेम. पहले बात, चलो लोन से ले सकते हैं. okay? दूसरा, सेकेंड वे कैसे ले सकते हैं? तुमने बोला इनकम, करेक्ट. यू कैन टेक फ्रॉम योर इनकम, बट लेट्स से मेरा बिजनेस है ना, हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं. बिजनेस में तो फर्स्ट डे पे इनकम है नहीं, तो फिर भी मैंने 10 करोड़ के को बिजनेस चालू करने के लिए प्लान तो चाहिए ना, प्लान, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट. इक्विटी. अच्छा, नाउ देयर आर टू पार्ट्स इन इक्विटी. ठीक, इक्विटी मतलब क्या? टोटल इक्विटी. देयर इज टू पार्ट्स. आई सी दिस लॉट ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन स्टूडेंट्स. टोटल इक्विटी या इक्विटी. तो आई विल स्पेसिफिकली मेंशन इक्विटी शेयर कैपिटल.
equity share capital. What does it mean? Sorry. शेयर होल्डर्स इक्विटी भी बहुत सारे, तो व्हाट डज इट मीन? तो मैं एक बैलेंस शीट खोल रहा हूँ. ओके, आई जस्ट ओपन. तो मेरा, अच्छा, लायबिलिटीज से ज्यादा आई विल रादर प्रेफर टू टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ फंड्स. ओके, मेरे सोर्स ऑफ फंड्स क्या है और मैंने वो फंड्स यूज कहाँ किए, दैट इज यूज ऑफ फंड्स. ओके, दैट इज माय एसेट्स. तो आई विल नॉट यूज एसेट्स लायबिलिटीज इसके आगे. आई विल यूज मेरे सोर्स ऑफ फंड्स क्या, मेरे यूज ऑफ फंड्स क्या. ओके, द फर्स्ट थिंग दैट यू लर्न इन 11th स्टैंडर्ड. हाँ, इश्यूड कैपिटल, करेक्ट, इश्यूड कैपिटल बोलते हैं. तो यू सेड पहले तो, अच्छा, टू स्टार्ट अ बिजनेस इट शुड बी इक्विटी शेयर कैपिटल. यू नो, लिसन केयरफुली दिस. इक्विटी शेयर कैपिटल, लेट्स से यू, चलो मैं, तुम्हारा बिजनेस है, मैं तुम्हारे बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारे पास पैसा है ही नहीं, तुम गए थोड़ा बहुत तुमने डाला था खुद का, तुम्हारे पास पैसा है ही नहीं, यू डोंट हैव द मनी. मैंने तुमको 1 करोड़ रुपए दिए. So 10 lakh. Just to keep it simple, I gave you 10 lakh rupees. Guys, if I give you 10 lakh rupees, what will you give me back? What will you give me? Shares. नहीं, shares ना, तुम्हारे कंपनी के shares, because I am putting my money into, I'm not giving you a loan. तो उसके लिए I will put notes. अभी वो कैसे आता है, जब तुमने 10 लाख, तो notes to accounts बोलते हैं, where you get detailed information of, notes to accounts where you get a detailed information about your, sorry, detailed information about your assets, about your day-to-day transactions, about your day-to-day transaction. So I will say a equity share capital note. See कैसे होता है equity share capital. तुमने मुझे 10 लाख, मैंने तुमको 10 लाख रुपए दिए. So how will you divide that? So there is something called face value. ये क्या होता है face value? Anyone? What do you mean by face value? तब करेक्ट, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि तुमने मुझे, मैंने तुमको 10 लाख रुपए दिए, दिस इज द अमाउंट. तुमने बदले में मुझे शेयर्स दिए. गाइस, कितने कितने शेयर्स दिए? वैल्यू ऑफ द कंपनी must be very raw, very vague term to say, because I have just, do you know value of my company? Do you know guys what is the value of Arc Advisory? है किधर डॉक्यूमेंट है? तो फिर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. ओके, बुक्स ऑफ अकाउंट से क्या, अभी तो मेरा पहला ही बिजनेस है. देयर इज नो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज ऑफ नाउ, माय फर्स्ट डे इन द बिजनेस. हाँ, स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ दैट शेयर, starting value of the share, original value at the time of inception. Good one, Vipin. Original value at the time of incorporation. Face value is original value of the stock at the time of incorporation. मतलब, and this can be kept by while preparing an accounts. तो तुम कुछ भी रख सकते हो. When you give money to the business, so if I say तुम्हारा face value 10 था, okay, यहाँ पे I will write it, original value of the time of incorporation. Just put it a note over here for your understanding. Original value, the time of incorporation. तुम्हारे आंसर्स लिख रहा हूं मैं सब, and I want you to reply back. Okay, तो ये हो गया तुम्हारा फेस वैल्यू. मतलब एक शेयर 10 रुपए का था, तुमने 10 लाख रुपए दिए, तो कितने शेयर इशू हो गए? नहीं, वे अदर धीरे, इट इज अप टू यू, कैन कीप 100, you can keep 20, it is totally up to you, can keep 2, 5, 1, it is up to you how much you have to give. Lesser the value, lesser the, so more the shares, like that. So if you want to keep less shares in the market, so you increase your face value. So correct, what I did is 10 lakh divided by 2.
Now this is you got your number of shares. 1 lakh are your number of shares in the market. That is called your face. Sorry, that is called. This is how you find your number of shares in the market. Remember this, huh? Because many of the time I ask student that I need to find the number of shares of a company. पता है स्टूडेंट क्या बोलते हैं मुझे, सर उसके लिए मुझे एनुअल रिपोर्ट लगेगा to find number of shares of the company. Guys, if I give you face value, any equity share capital बैलेंस शीट में होता है, यहाँ पे है ना. ठीक है, बैलेंस शीट भी खोलता हूँ एक. I will open a balance sheet. So we are tracking automobile industry. Sorry, we are tracking automobile and hospitality industries today. So I will just open one balance sheet to keep stand. So how to open a balance sheet? Screener.in. You go on screener.in. यहाँ पे. Now we are tracking. I will put a Maruti car because it is one of my favorite stocks, which I have invested, and I have got a return of approximate 50% CAGR. Okay, so यहाँ पे ना क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं कंपनीज के. दिस इज इसी इंटरव्यूज में तब ज्यादा ना प्रोबेबली दे गिव यू अ क्वार्टरली रिपोर्ट. अभी यहाँ पे दिस इज द रिपोर्ट. आई विल जूम इट अ बिट. कैन यू फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स फ्रॉम दिस? कैन यू फाइंड? फाइंड करके देगा मुझे क्विकली. ये है फुल ईयर का नंबर्स, ये है. कैन यू फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स? अभी मैंने बताया तुमको. कैन एनीवन? Yes, still you want an annual report? Do you want an annual report? Total equity, number of shares कहाँ पे है सोहित? Where is the number of shares? That is what I found. Yeah, this is an income statement, correct? Just now I said paid up share capital है ना यहाँ पे. Equity share capital 1572 and क्या है? Face value 5. Shashwat is right. 314 is the number of total shares. So annual report की क्या जरूरत है तुमको? क्या करोगे एग्जैक्ट नंबर लेके? Here, see here. Yes. Paid up equity share capital and the face value of share is 5. ये एक इनकम स्टेटमेंट है, फिर भी यहाँ पे तुमको नंबर ऑफ शेयर्स मिलता है. डोंट फॉरगेट दैट. बैलेंस शीट में ही नहीं, इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि तुमने कभी देखा ही नहीं होगा शायद से ये, तो हम तो इसी पे रहते पूरा एंटायर एनालिसिस ऑन दिस. अभी क्या हुआ ना, ये कभी आया पता है? क्वार्टर एंड सितंबर में आया. बराबर, अगर यहाँ पे शेयर्स इश्यू हुए होंगे तो तुमने अगर एनुअल रिपोर्ट में देखा, कहना से एनुअल रिपोर्ट में तुमको ये नंबर्स मिलेंगे, कहना से दैट. देखो क्वार्टरली है. अभी यहाँ पे तो सेम है, यहाँ पे तो सेम है. तो आई हैव सीन दिस प्रॉब्लम विद स्टूडेंट्स दैट आई टेल यू व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर्स. वो एनुअल रिपोर्ट में जाके बोलते हैं शेयर्स कितने हैं. अरे एनुअल रिपोर्ट तो 31st को हो गया था ना ऑलरेडी. वी आर इन नाउ जनवरी में आ गए. So it's not available on the shading screen. Is it? This is the screen, guys. You can see this. What is not available? Sorry, yes, I didn't get you. Guys, is it visible, right? ये क्या पेड अप है ना यहाँ पे? Is it visible? I'm selecting. हाँ ये visible ना. हाँ sorry, that's what. Yeah, this. Okay. Yeah. So there are students who tell me that sir हमको annual, क्योंकि तुम अगर annual report में जाके देखोगे 25 टेस्ट मार्च 25 में होगा annual report लास्ट. नेक्स्ट annual report will be in 26 March 26, and मार्च के बाद भी it comes around July August. So you need to talk about where is the share capital, recent share capital बात करनी है, not this one also. This is the recent equity share capital, number of shares, sorry. हाँ नहीं, अनऑडिटेड होगा फिर भी
Odyssey audit is done just to have some, if there is some issues, then it is done. But companies like this, big companies never forge their statements. Okay, it's very rare. A company like this, listed companies forge their statement. And see, audited, see, what do you mean by audited? It is that everything is right. Okay, Bhargav, it means audited, that everything is right and it has been checked by someone. तुम तुम्हारे बैंक अकाउंट में खुद के अकाउंट रॉन्ग बनाओगे? You know what does it mean? Guys, if the paid up share capital increases, what does it mean? If the paid up share capital increases, say what does it mean? Raise funds. So अगर guys balance sheet में पैसा आ रहा है, obviously something would have increased. हाँ, so audited and unaudited में कुछ फर्क नहीं होता है. It is one and the same. Hardly there is any changes in audited. Though this number, see, these accounts are made by the company. They cannot forge it. Fine लग जाएगा सभी का अगर कुछ गलत किया तो. You cannot forge on the numbers. It is very rare thing to happen in the industry. It's very difficult, and you cannot catch. गलत हो गया. You have to rely on the information given by the company. Okay. So this is how you find. याद रखना. This is how you find equity share, number of shares. Don't ask for sir हमको annual report चाहिए. Okay. Okay. अच्छा. Now let's go to. अच्छा, पैसा आया तुमको. हाँ. Now loans. Sorry. यहाँ पे face value I have given. Okay. Now debt. डेट भी दो टाइप के होते हैं. सॉरी, इक्विटी, सॉरी आई फॉरगॉट. एक इक्विटी शेयर कैपिटल होता है और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होता है. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. अच्छा, ना व्हाट इज द डिफरेंस? प्रॉब्ली मेनी ऑफ यू माइट बी नोइंग इट, बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज दैट यू गेट अ ड्यूअल बेनिफिट. एक तुमको डिविडेंड्स भी मिलते हैं एंड यू गेट अ प्राइस एप्रिसिएशन एज वेल. सो ऐसा लिखते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट 10%. सेम कंसेप्ट. 10 लाख रुपए के है, मैं 5 लाख करता हूं. कितने इश्यू हुए होंगे? फेस वैल्यू 10. चलो फेस वैल्यू 5 कर लेता है इसका. सेम वे, and if can I say this is how you can find? Yeah, so preference shares has the benefit of debt and equity. अच्छा, what is the हाँ, voting rights नहीं होते guys. मुझे बताओ, तुम्हारे पास भी शेयर्स होंगे ना. कौन सा वोट किया मुकेश अंबानी, तुम्हारा सुना है? हाँ, मैंने वोट किया अगेंस्ट. मुकेश अंबानी बोल रहा है मैं ये प्लान कर दूंगा, आई एम अगेंस्ट हिम, यू शुड नॉट ओपन द प्लांट. ठीक है, but preference shares probably don't have a voting right. So preference shares are basically taken for the purpose. So it is best for the equity holders कि हमको, जैसे we investors, we are not interested in companies voting. और एक फायदा है, one more advantage, that during the time of liquidity, this is the one who will get the money first. मतलब अगर लेट्स से कंपनी डिफॉल्ट हो गई है एंड टोटल तुमने 15 लाख दिए ना, पर अभी कंपनी के पास 7 लाख रुपए ही है, तो पहले 5 लाख तुमको मिलेंगे एंड द कंपनी वोंट गेट द नेक्स्ट, इक्विटी होल्डर्स विल नॉट गेट द मनी. पहले से 15 लाख देने बाकी है कंपनी के, एंड कंपनी के पास 7 लाख पड़े, तो 7 लाख में यू विल बी गिवन द प्रेफरेंस फर्स्ट. ओके, सो दिस इज बेसिक. अगेन दिस इज हाउ इट इज इन. सेम कंसेप्ट गोज विथ डेट, या तुम बोल सकते हो डिबेंचर्स. ठीक है, debentures. So there are two types of debentures. One is convertible debentures, and one is non-convertible debentures. Non-convertible debentures. क्या फर्क है दोनों में? I will tell you when this listen carefully, when this convertible debentures are issued. So what is the purpose of using convertible debentures?
व्हाट इज द पर्पस, बराबर, जो इक्विटी में कन्वर्ट होता है, हाँ, कन्वर्टेबल मीन्स कन्वर्ट इनटू इक्विटी, बट नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ इशूइंग दिस? एनीवन? टॉक, टॉक इन टर्म्स. हाँ, वो तो सी, द आंसर्स दैट यू आर गिविंग व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, परफेक्ट डेफिनेशन हो गया. नाउ व्हाट, व्हाई इट इज डन? ऐसा मैं, मेरा कंपनी है, व्हाई वुड आई इशू कन्वर्टेबल डिबेंचर्स? टू सेव इंटरेस्ट पेमेंट्स. टू सेव कैसे होगा प्रीत? मैं तो डिबेंचर है तो मैं तो दूंगा ना इंटरेस्ट. हाँ, करेगा अनुराग. इफ द कंपनी डजंट वांट टू रीपे द डेट, बट थिंक अगेन, ये ना, ये सब क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यू तुम्हारे एग्जाम्स में. हु विल गिव प्रेफरेंस फर्स्ट? अच्छा, वन सेकंड, कृणाल इज आस्किंग हु विल गिव प्रेफरेंस फर्स्ट, डेट और नहीं, प्रेफरेंस तो डेट ना, पहले तो डेट. सी, शेयर्स तो बाद में आएंगे ना सब. पहले तो बैंक को पैसा देंगे, फिर शेयर्स पे आएगी, बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, यू विल टेक द हिट. ये तो लोन है. फर्स्ट, हाँ, वो माय क्वेश्चन इज दैट व्हाई डू वी. अच्छा, नाउ लेट मी आस्क यू बेसिक क्वेश्चन. अगर मुझे पैसा रेस करना है, लेट्स से, शुड आई रेस इक्विटी और शुड आई रेस डेट? कन्वर्टेबल डेट्स आर चीपर फॉर कंपनी टू, नहीं वो सब तो नहीं, चीपर वेपर की नहीं. डू गिव मी अ बेसिक एग्जांपल. इफ आई वांट टू raise money for my company, should I raise equity or should I raise debt? अच्छा, why debt? Why debt? Debt is long term less expensive than cost of debt is cheaper than cost of equity. Okay, depends. Equity, debt at low. If I'm buying a house, I will not give of my home to a builder. Depends on the stage of the company. That acts as a loan for raising equity. नहीं, ऐसा नहीं है. See, in any case, it, Jojo was saying it depends. It doesn't depend. If you are raising equity, इसका मतलब you are diluting your own stake. So that is unavoidable. वो तुम आंसर बोलते हो ना कि it is cheaper than equity, तो वो फिर अचानक से ना the interviewer will again ask you unnecessary difficult questions. If you are raising equity, see, first of all, if this question is asked, will you raise debt or equity? Probably, sir, it will be debt. Because I will not like my company to dilute my shares. फिर वो cost of equity कितना भी ऊपर या नीचे क्यों ना हो, I will not like my company, I will not dilute my shares. Because it is my own company, I can grow my company and I will not be ready to give my debt, give my ownership to someone else, some third party. If possibly, I will take 100% debt. जितना मुझे डेट मिलता है उतना मैं ले लूंगा. So it is said ना, तुमने अगर फाइनेंस इंटरव्यूज भी काफी देखे होंगे, जैसे टेक एज मच एज डेट. टैक्स बेनिफिट तो देता ही है, बट टैक्स बेनिफिट नहीं भी देता होगा तो, भार्गव, विल यू गिव अ पीस ऑफ योर हाउस टू मी टू रेज योर फंड्स? तुमको घर में इंटीरियर चेंज करना है, दोगे क्या? मुझे हिस्सा दोगे? मैं तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट डेट भी अवेलेबल है. यूएस में तो 1% पे डेट अवेलेबल है. तो इट इज नॉट बिकॉज इट इज चीपर, इट इज बिकॉज यू विल नॉट, आई विल नॉट डायल्यूट माई ओनरशिप इन एनी केस. अच्छा, बट अगर मैं ऐसा कर रहा हूं, इफ आई एम रेजिंग इक्विटी, गाइस, व्हाट विल बी माय प्रॉब्लम? मैं ऐसा क्यों करूं? किसी को अच्छा लगेगा कि अपने घर का हिस्सा किसी और को देने को, थर्ड पार्टी को? विल आई लाइक टू गिव? तो ऐसा मैं कब करूंगा? व्हेन विल आई डू दैट? कि मैं मेरा हिस्सा, मेरे घर का हिस्सा किसी और को दे रहा हूं पैसे रेस करने के लिए. थिंक, थिंक एन आंसर. व्हेन विल आई डू दैट? व्हेन आई हैव नो ऑप्शंस. अच्छा, फाइनेंशियल बात करते हैं. व्हाट अबाउट माय फाइनेंशियल्स? विल आई बी फाइनेंशियली स्टेबल और विल आई बी फाइनेंशियली अनस्टेबल? Unstable when you are not capable of doing, giving back the debt,
ऑब्वियसली वो क्रेडिट एनालिसिस होगा तुम पे. माई कैश फ्लो इज ब्रोकन, करेक्ट. लैक ऑफ प्रॉफिट्स, नो परस्पेक्टिव, दैट इज द ओनली टाइम आई विल रेज इक्विटी. इसके लिए स्टार्टअप्स इक्विटी रेज करते हैं. इसके लिए दैट इज द रीजन स्टार्टअप रेज इक्विटी, बिकॉज बैंक विल नेवर गिव देम लोन. जोमेटो इज मेकिंग 1,000 crore लॉसेस. कौन सा बैंक लोन देगा? उनको तो इंटरेस्ट में मतलब है. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन ओनरशिप. सो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी बताओ, इन विच स्टेज of the cycle will you be in? Will you be in growth phase? Would you be in the startup phase? तब कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करोगे, या would you be in your peak stage? So yeah, एक सेकंड. Peak, growth, startup. When will you issue convertible debentures? Maturity stage. तो मैच्योरिटी पे तुम अपना कन्वर्टेबल लेवल पता है ना क्या होगा? थोड़े टाइम में वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा. तुमको चलेगा इफ इट्स कन्वर्ट इनटू इक्विटी? गाइस, शार्क टैंक देखते हो? शार्क टैंक देखते हो? दिखा करो, नहीं देखते तो. उसमें पता है वो लोग बोलते हैं कि मैं तुमको डेट देता हूं, तो तुम मुझे 2 साल तक 10% दोगे, और उसके बाद मैं वो इक्विटी में कन्वर्ट कर लूंगा. पता है क्या? सुना होगा कि दे विल गिव यू लेट्स से वॉट एवर अमाउंट इज आस्किंग, एंड वो बोलता हूँ कि 2 साल में तुमको 10% रिटर्न दूंगा, एंड फिर 2 साल बाद यू विल कन्वर्ट इट इनटू इक्विटी. तो गाइस, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स प्रोबेबली स्टार्टअप्स या अर्ली स्टेज कंपनी ही इशू करती है. इट इज नेवर इशूड बाय अ मैच्योर कंपनी. क्योंकि उनको डर है ना, तुम मैच्योर कंपनी, व्हाई वुड यू रिड्यूस योर स्टेक इन कंपनी? एंड इससे क्या होता है, इससे बेनिफिट क्या होता है? व्हाट इज द बेनिफिट फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से? गाइस, व्हाट इज द बेनिफिट? इफ द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम अगर इन्वेस्टर हो, तुमको इक्विटी भी मिल रहा है और साथ में कहने से डेट भी मिल रहा है, इंटरेस्ट भी मिल रहा है. तो क्या होता है, 2 साल, जैसे अभी एकदम जैसे यू कम टू मी, ओके, एंड आई टेल यू गाइस मेरा आरके एडवाइजरी है, मुझे तुम पैसा दे दो. यू आर लाइक ओके सर. ना इफ यू डोंट नो मी, यू डोंट नो मी, तो तुम क्या बोलोगे? सर मुझे क्या पता आप ग्रो होगे कि नहीं, तो मुझे 2 साल तक तो इंटरेस्ट चाहिए, फिर मैं देखूंगा कि कन्वर्ट होके वो कितना बेनिफिट होगा. तो मैं भी बोलता हूँ कि अरे मैं तुमको डेट देने के मतलब आई कैनॉट रिपे यू द मनी. ऐसा भी होता है मेरे पास से कि आई कैनॉट रिपे यू द मनी, मुझे अभी पैसा चाहिए बट मैं तुमको इंटरेस्ट दूंगा. हाँ, या इट इज अ लो रिस्क टू इन्वेस्ट इन योर इक्विटी. मतलब इक्विटी एट देन इक्विटी में इन्वेस्ट होगा ये पैसा जाएगा इक्विटी में. बट करेक्ट, रिस्क थोड़ा कम होता है इसमें, ताकि कम से कम तुमको 2 साल तो पैसे आ रहे हैं. एटलीस्ट यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ रिटर्न्स. ये जैसे सेम लाइक डेट. तो स्टार्टअप एंड अर्ली, सो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, it is good to have, can I say that it is good to have convertible debentures, then direct equity at the start. स्टार्टअप कंपनी है तो पता तुमको थोड़े साल तो पैसे आ रहे हैं, एंड देन होगा तो इक्विटी में कन्वर्ट. तो तुमको इक्विटी का भी बेनिफिट हो गया और कन्वर्टेबल इसका भी बेनिफिट हो गया, एंड दिस इज फिक्स. ये तो पैसे तुमको स्टार्ट में आ जाएंगे. ओके, सो इट इज इशूड बाय अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स. ओके, स्टार्टअप्स और अर्ली स्टेज कंपनीज. नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इज नथिंग बट योर लोन. ओके, नथिंग बट योर लोन. तो इसको भी ऐसे ही होता है, डिबेंचर जैसे बोलते हैं, डिबेंचर्स एट का फेस, इसका भी फेस वैल्यू होता है 1,000. कैसे 1,000 है? 1,000 है और लक्ष्य मैंने तुमको 5 लाख रुपए दिए है, तो कितने डिबेंचर इशू हुए होंगे? का फेस वैल्यू 1,000. राइट, सो डिवाइड बाय, सो 500 डिबेंचर्स इशू हुए होंगे. सेम है, नॉन कन्वर्टेबल डेट सेम लाइक लोन, उसमें कुछ भी फर्क नहीं है. लोन स्पेसिफिकली लोन, इस पे हमको इंटरेस्ट मिलता है.
अच्छा ऐसा भी बोलते हैं ये 5 एट एट 8%, अच्छा एट 10% फेस वैल्यू 1000, ऐसा भी वो लिखते हैं। एट 10% मतलब इंटरेस्ट रेट होता है उसका, कन्वर्टेबल आफ्टर 2 years। अच्छा अभी मेरे पास 1000 है, मेरे पास 1000 है, मैं बोलता हूँ कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल कन्वर्जन रेशो, कन्वर्जन रेशो 2:1, मतलब क्या? कन्वर्जन रेशो 2:1। कन्वर्जन रेशो इज 2:1, तो इट इज रेड फ्रॉम द बैक साइड कि अगर मेरे पास एक डिबेंचर है तो इट विल गेट कन्वर्टेड, ऑलवेज बैक से रीड होता है, रीड हमेशा बैक से होता है। दो है तो एक नहीं मिलेगा, एक है तो दो मिलेगा, इट इज ऑलवेज रेड इन दिस वे। तो मेरे पास कितने हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स? 500। इफ द कन्वर्जन रेशो इज 2। अच्छा इसमें तो इजी होता है, क्वेश्चन कम्स इसमें, अभी क्या करोगे? वो तो इजी था, वो तो इजी था कि एक था तो तुमको डबल मिल गया। अभी दो है तो तुमको तीन मिलेंगे। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? ओके यू, अच्छा दो यू डोंट अंडरस्टैंड, आई कीप दिस बेसिक, ऐसा करते हैं। मैं अगर एग्जाम में कभी आ गया कुछ अलग नंबर आ गया, दो है तो तीन मिलेंगे, तो तुम्हारे पास है कितने? तुम्हारे पास है 500, यू हैव 500, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये 750 कैसे है तुम? My question comes, how many additional? So you have got 750 shares, new shares, टू है तो तीन मिले, दो है तो तीन मिले। तो याद करना, इफ यू याद समझता नहीं है, 2/3 करना है, 3/2 करना है, तो क्योंकि ये बोनस स्प्लिट में वापस आएगा तो दैट विल बी डिफरेंट वे। कन्वर्जन रेशियो 2:1, 3 से मतलब दो है तो तीन मिलेंगे। तुम्हारे दो है, दो है मतलब तुम्हारे पास कितने? 500 है। और दिस इज लाइक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 500 into 3 डिवाइड बाई 2 इज 750। ओके, एंड इट गेट्स कन्वर्टेड। तो वापस आऊंगा इस पे मैं, तब वापस पूछूंगा मैं, तो भूलना मत। ओके पैसे आ गए मेरे पास। अभी कौन कौन है इशू करने वाले? इक्विटी शेयर कैपिटल है मेरे पास, प्रेफरेंस शेयर्स है, यू नो हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल एंड कन्वर्जन रेशियो। अच्छा बट व्हेन आई आस्क यू, ये टोटल इक्विटी क्या होता है? टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी, व्हाट डज इट मीन? टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी, अभी इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या मतलब है? नहीं नहीं हर्षिता, 500 शेयर्स ऑन, हाँ मतलब 500 डिबेंचर्स है ना तुम्हारे पास, तभी 500 के बोले तुमको 750 शेयर्स मिल गए। टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर्स प्लस रिजर्व एंड सरप्लस और रिटेन अर्निंग्स, एसेट माइनस लायबिलिटी। नहीं, ये एसेट माइनस लायबिलिटी का आंसर नहीं देना है कभी इंटरव्यू में। नेवर एवर गिव दिस आंसर, नेवर एवर गिव दिस आंसर। सलोनी इज राइट। सलोनी एनीथिंग मिसिंग? कुछ बाकी है? नॉट श्योर, ओके। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड मतलब क्या होता है ना? तुमने पैसा रेस किया एंड ऑब्वियसली एक प्रेफरेंस शेयर्स था, सॉरी एक इक्विटी शेयर्स था। अच्छा इक्विटी शेयर्स ना, आई विल टेल यू, नाउ डोंट आस्क दिस क्वेश्चन इन द इंटरव्यूज। मुझे किसी किसी लोगों ने क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यू में, सर ये इक्विटी शेयर है वो कॉमन है या प्रेफरेंस है? व्हेन इट इज रिटर्न इक्विटी तो वो कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर्स ही होता है। अगर प्रेफरेंस है तो स्पेसिफिकली दे विल मेंशन प्रेफरेंस। रिमेंबर दिस थिंग, ये याद रखना। मुझे काफी लोग पूछते हैं इंटरव्यू में, सर व्हाट इज दिस, इक्विटी है कौन सा है, प्रेफरेंस है या कॉमन है? तो व्हेन इट इज रिटर्न इक्विटी तो इट इज कॉमन शेयर होल्डर्स ओनली, और प्रेफरेंस शेयर्स हमेशा अलग लिखेगा,
कॉमन इज नॉर्मल शेयर्स, जहाँ पे यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, इज नो प्रेफरेंस ऑन टू इट। कॉमन शेयर होल्डर्स मतलब वो शेयर होल्डर्स कंपनी की, उसको कॉमन बोलते हैं बस। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स, ये हो गया। जैसे मैं बोलता हूँ ये 5 लाख है मेरे। ओके, अभी क्या बचा? किसी ने बोला सलोनी टोल्ड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओके, रिजर्व्स एंड सरप्लस, फाइन। ये भी एक आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। चलो, व्हाट इज रिजर्व एंड सरप्लस? मैं यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट में डालता हूँ, रिजर्व एंड सरप्लस अगेन पुट इनटू नोट्स टू अकाउंट्स। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है? इसको बता दे, क्या क्या आता है रिजर्व एंड सरप्लस में? रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। क्या? और डेप्रिसिएशन। योगेश, हाउ डज डेप्रिसिएशन कम इन रिजर्व एंड सरप्लस? रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे इंपॉर्टेंट इज योर गाइस, ये कौन बोलेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सबसे पहले तो वो आएगा ना, नेट प्रॉफिट, या अभी बोला था उन्होंने। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसमें आता है। उसमें से तुम क्या देते हो? यू सब्ट्रैक्ट डिविडेंड्स। ओके, नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड securities premium. When is securities premium आता है? When do you get securities premium? ये क्या होता है securities premium? When shares are issued, correct, above your face value. Guys, can only be premium हो सकता है, डिस्काउंट नहीं हो सकता इसमें? Can there be discount? पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल। तब क्या होगा? तब भी ऐड होगा। तब वो डिस्काउंट पॉसिबल है, बट इज वेरी रेयर थिंग, इज वेरी रेयर। बट डिस्काउंट है तो याद लेस होगा, इट विल लेस। इफ इट डिस्काउंट इट विल लेस, ऐसा होता नहीं है। इसके लिए बोलते हैं एड सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओके, यूजुअली व्हेन यू शेयर इक्विटी यू गेट सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा, फिर आते हैं जनरल रिजर्व आते हैं। एक जनरल रिजर्व होता है जो वी डोंट एनालाइज मच, किसी के लिए किसी पर्पस के लिए रखे होते हैं। जनरल रिजर्व और कुछ है? देयर इज समथिंग कॉल्ड रीवैल्यूएशन रिजर्व्स। किसी को पता है क्या है ये? एनीवन, व्हाट इज दिस? या, डिस्काउंट इज नॉट परमिसेबल, यस करेक्ट। रीवैल्यू ऑफ एन एसेट, when the asset is revalued, और कौन सा एसेट? ओनली द पीपी, या ओनली द एसेट्स which you are reclassifying into। तो क्या होता है? लेट्स से मैं बोलता हूं मेरे ना एसेट की वैल्यू थी लैंड, ठीक है? लैंड मैंने रिपोर्ट किया था 1 लाख पे। यूजुअली यू डोंट रिपोर्ट लैंड, तो नहीं रिपोर्ट करते, लैंड इज रिपोर्टेड एट कॉस्ट। मैं चलता हूँ एक ना पीपी करता हूँ, एक प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट है। नाउ क्या होता है, एज पर आईएफआरएस यू हैव सर्टेन एसेट्स होते हैं which you can report at market value because it shows you a good picture। अगर ये तुम्हारे पीपी का वैल्यू, लेट्स से कुछ तो हो गया है, वैल्यू इंक्रीज होके 1,10,000 हो गया, ऐसा होता नहीं है। बट रेयर सिनेरियो, तुमने कोई एसेट लिया था इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे तुमने घर लिया होगा, जैसे तुमने ऑफिस लिया है, एंड अभी वो ऑफिस की वैल्यू बढ़ गई है, तुमको वापस रिपोर्ट करना है कि मुझे वो फेयर वैल्यू पे रिपोर्टिंग चाहिए, एंड वो वैल्यू 1,10,000 हो गई, 10,000 प्रॉफिट हुआ तुमको, या बैलेंस शीट अमाउंट इंक्रीजेस, तो 10,000 प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा?
10,000 प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा? लैंड तो नहीं करते यूजुअली, बट हाँ, अगर वो 10,000 रुपया जो प्रॉफिट है, यू कैन नॉट शो इट इन योर P&L स्टेटमेंट, हाँ, बिकॉज इनकम स्टेटमेंट में बताया क्योंकि वो तुम्हारा इनकम नहीं है। तुमने वो एसेट बेचने के हिसाब से नहीं खरीदा था। वो एसेट तुमने बेचने के हिसाब से नहीं खरीदा, बट सम ऑफ द रीजन वो एसेट की वैल्यू बढ़ गई है। तो मतलब, तो वो इट इज नॉट या इनकम, इट इज नॉट अ रेगुलर प्रॉफिट, इट विल कम इनटू योर रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, वाइस वर्सा। अगर वो तुम्हारी वैल्यू कॉस्ट से भी कम हो गई, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन से भी कम हो गई है, तो इट विल गिव अ नेगेटिव रिजर्व। ओके, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। और एक इसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस में और एक आता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। व्हाट इज दिस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम? ये भी एक चीज है जो तुमने मिस की जब मैं रिजर्व एंड सप्लाई। ये तो ठीक है, दिस इज फॉर्म्स दिस थ्री पार्ट, बट उसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंज अलग से नहीं दिखाते, रिजर्व्स में ही ऐड कर देते हैं, विच इज नॉट योर रेगुलर इनकम, एज इन सेल ऑन स्टॉक्स, अनरियलाइज गेन्स ऑन लॉसेस, किस पे? शेयर्स पे, म्यूचुअल फंड्स पे, किस पे आता है? कैपिटल गेन्स किस पे? करेंसी। करेंसी इन्वेस्टमेंट में नहीं, दिस इज व्हाट इज द आंसर। तुम गलत बोलते हो। यू डोंट गेट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अदर OCI बोलते हैं इसको। नहीं अंकित, इंटेंजिबल वो सब नहीं होता है। वो सब तो बेसिकली अनरियलाइज गेम में P&L के पार्ट है ना, वो तो अलग से लिखने की क्या जरूरत है? अदर कॉम्प वो तो सब नॉन रियलाइज गेन में आ ही जाते हैं। व्हाट आर दोस? व्हाट इज दोस? पहले तो गेन्स ऑन लॉसेस, इसमें सिर्फ चार ही आते हैं, देयर आर ओनली फोर पार्ट्स दैट कम्स, गेन्स एंड लॉसेस ऑन अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज, फॉर सेल सिक्योरिटीज। बन सके, जस्ट मिनट गाइस, बन सकता। जस्ट राइट इट, जो जो दिया है जस्ट पुट इट। मतलब याद रखना, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद तुम्हारा OCI, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। दिस आर द फोर थिंग्स दैट दे हैव गिवन। क्या है ये? चेंजेस इन रिवैल्यूएशन रिजर्व, मतलब जो रिवैल्यूएशन हमने बनाया था ना, उसमें अगर कोई चेंज होता है, देन इट इज शोन इनटू रिवैल्यूएशन सरप्लस। था चेंजेस इन रिवैल्यूएशन, जो हमने मैंने तुमको बताया था वो रिवैल्यूएशन था। अगर उसमें कुछ चेंज होता है तो यूजुअली ये नहीं होता, इट इज वेरी रेयर थिंग टू हैपन। ये मैं निकाल देता हूं अभी के लिए। मेजर ये चार होते हैं: रीमेजरमेंट ऑफ गेन ऑन लॉसेस ऑन डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान्स, मीन्स, अच्छा ये क्यों होता है ऐसा, अलग से क्यों लिखते हैं? आई विल टेल यू व्हाई इट इज रिटन लाइक दिस। बिकॉज सी बेनिफिट प्लान मतलब पेंशन प्लान हुआ, कंपनी ने तुम्हारा PF काटते हैं, कंपनी PF काटते हैं, तो कंपनी PF काट के इन्वेस्ट करती है, उस पे अगर गेन हुआ, इज इट अ कंपनीज प्रॉफिट? कंपनी ने गेन्स के लिए इन्वेस्ट किए थे, फिर कंपनी इन्वेस्टेड फॉर गेन्स, वॉज द पर्पज ऑफ हैविंग गेन्स? वो तो बेनिफिट के लिए इन्वेस्ट किए थे कि एम्प्लॉय का बेनिफिट हो। बट उस क्या होता है, कंपनीज ना एक एसेट क्रिएट करता है, वो एसेट में वो पैसा रखता है। ओके, और वो एसेट का पैसा, वो एसेट एप्रिशिएट हुआ, जैसे उसने कोई स्टॉक्स लिए होगे, गोल्ड लिए होगे, एंड वो अगर एप्रिशिएट हुआ, तो उसका बेनिफिट इज सेट टू बी गेन। जो गेन है, लॉस या गेन जो भी है,
इट शुड नॉट कम इन योर P&L स्टेटमेंट, क्योंकि वो तुम्हारा एक्चुअल इनकम और लॉसेस नहीं है। तुमने इन्वेस्टमेंट भी नहीं किए थे और उसका कोई पर्पस नहीं था टू गेन। कभी कभी लॉसेस भी होता है, वो है। चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स और लायबिलिटीज दैट आर अकाउंटेड थ्रू OCIs। अभी ऐसे ना थोड़े बहुत सिक्योरिटीज होते हैं, नॉट ऑल इन्वेस्टमेंट, देयर आर सम सिक्योरिटीज CFA के बुक्स में दिया है अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज। मैं लिख के रखता हूं, अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज। अभी ये क्या होता है ना, ये यूजुअली बैंक्स में ज्यादा होता है कि बैंक्स में ना उनको थोड़ा पोर्शन किसी कंपनी के पास, RBI के पास रखना पड़ता है, या रिजर्व में रखना पड़ता है, स्टैट्यूटरी रिजर्व रखना पड़ता है। अगर उनपे उनको प्रॉफिट हुआ तो दैट इज नॉट एन इनकम प्रॉफिट, वो तो उनका रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट था, उनको उस पर प्रॉफिट हुआ। नहीं, नॉट इक्विटी शेयर्स अंकित, नॉट इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर इसमें आते ही नहीं है। जो तुमने इन्वेस्टमेंट के लिए, ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का पर्पज है, तो तुमने सिर्फ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के पैसे वो पैसे रखे थे। मतलब समझ लो ना अंकित, तुमने FD रखा है, 0% FD रखा है ना, FD का रेट बढ़ गया। तुमने सिर्फ तुम्हारे, ऐसा होता है क्या कभी कि तुमने ना FD किसी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के लिए रखा है एंड उसका वैल्यू बढ़ गया। FD तो इन्वेस्टमेंट होता है, बट लेट्स से 0% रिटर्न था उसमें, बट समहाउ कि मार्केट में प्रॉब्लम हो गया या FD रेट्स इंक्रीजेस, तो दैट इज कॉल्ड अवेलेबल ऑफ सेल सिक्योरिटीज। वो स्पेसिफिकली रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के बेस रहता है एंड उस पर अगर कुछ तुमको प्रॉफिट या लॉस हुआ, दैट शुड फ्लो थ्रू OCI। इस पर मैं आता हूं बाद में, फाइनेंशियल फॉरेन ट्रांजैक्शन पे। गेन्स ऑन अकाउंट्स ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स दैट इफेक्टिवली हेज रिस्क। Now, this is not your regular foreign currency gains and losses. Huh? Remember this word, hedge. तुम भी ट्रेडिंग करते हो, तुम भी हेजिंग करते हो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में। कॉल पुट जिन्होंने क्लियर किया है ना, यू बाय अ स्टॉक एंड सेल अ पुट, कवर कॉल, सॉरी, बाय अ स्टॉक एंड सेल अ कॉल, कवर्ड कॉल होता है। बाय अ स्टॉक एंड बाय अ पुट, प्रोटेक्टिव पुट, वो सब हेजिंग स्ट्रेटेजीज है। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट क्यों लेते हैं? क्योंकि कोई रिस्क है दैट यू वांट टू अवॉइड। मतलब जैसे मैं गोल्ड ट्रेडर हूं, मैंने एक डेरिवेटिव्स में रिस्क हेज किया है। हैव आई डन इट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स? हैव आई डन, मैंने वो प्रॉफिट के लिए लिया है क्या? इफ इट्स नॉट फॉर प्रॉफिट देन प्रोबेबली इट इज, मतलब वो हेज किया है मेरे रिस्क संभालने के, मैंने मेरा लॉस ना हो इसके लिए मुझे वो किया है। बट अगर कभी कभी लॉस हो जाता है, कभी कभी और कुछ चीजें ना, एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट, सो वो चीजें डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, और क्या रखना, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, बट इट इज ओनली फॉर हेजिंग। अगर कंपनी ने खुद के लिए कर रहा है इन्वेस्टमेंट, जैसे मैं, मेरा आरके एडवाइजरी है, मैं करता हूँ हेजिंग मेरे कंपनी में, तो वो नहीं आएगा इसमें OCI में। दैट इज अ पार्ट ऑफ माई रेगुलर इनकम, या चलो माई इन्वेस्टमेंट इनकम, अदर इनकम ही आएगा, बट OCI से नहीं जाएगा। Gains and losses arises on account of translation of financial statement of foreign operations. Unrealized gains and losses in foreign currency. फॉरेन करेंसी के चक्कर में तुमको जो लॉसेस, गेन्स और लॉसेस हो गए, दैट फ्लोज थ्रू OCI, बिकॉज उसका इट इज नॉट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट फ्रॉम ऑपरेशंस, इट इज नॉट फ्रॉम फाइनेंसिंग। तो फॉरेन करेंसी जो भी गेन्स होते हैं, गेन्स एंड लॉसेस, दैट कम्स थ्रू योर ऑपरेशंस। रिमेंबर दिस वे, याद रखना है तो, गेन्स एंड लॉसेस फ्रॉम फॉरेन करेंसी, गेन्स एंड लॉसेस फॉर फ्रॉम डेरिवेटिव्स, ठीक है, गेन्स एंड लॉसेस फ्रॉम डेरिवेटिव्स, एंड गेन्स एंड लॉसेस वापस फ्रॉम एसेट्स जो तुम्हारे फेयर वैल्यू अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज, एंड द फोर्थ वन इज योर डिफाइंड पेंशन प्लान। सो मैं हाईलाइट करके रखता हूं, हाईलाइट दिस, वेरी इंपॉर्टेंट ना थिंग्स टू अंडरस्टैंड। ये बहुत चीजें पूछते हैं इंटरव्यूज में, CFA का पार्ट है, यू शुड नो दिस। फाइन, फेयर इनफ। So those all things forms a part of your total shares equity। तो reserves and surplus में भी उसको बोलते हैं changes in shareholders funds, ऐसा बोलते हैं इसको। reserves and surplus नहीं बोलते, changes in shareholders fund।
So if anyone asks you what do you mean by shareholders equity, it is nothing but equity share capital, preference shares, reserves and surplus, and OCI, other comprehensive income. Usually it is a part of reserve and surplus, but better to say the part of reserve and surplus, but better to say that. तो ये होता है चेंजेस इन शेयर होल्डर्स फंड्स. पैसा कहाँ से आता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या आता है? टोल्ड यू, इन एंड सरप्लस, दिस आर द थिंग्स which forms a part of reserves and surplus. Profit, loss, securities premium, general reserve, revaluation reserves, and OCI. अच्छा, शेयर होल्डर्स इक्विटी को हम बुक वैल्यू भी बोलते हैं कंपनी का, शेयर होल्डर्स फंड्स भी बोलते हैं. सिया, आई नॉट टेलिंग अगेन एंड अगेन, शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं, नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स भी बोलते हैं. ओके, एवरीथिंग मीन्स द सेम. टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी, book value of the company, book value of the company. Okay, let me specify it. Book value of the company. Things are used interchangeably. Number of shareholders. Sorry, book value of the company, shareholders funds, and net asset value. Net NAV जो बोलते हैं ना कंपनी का, NAV कंपनी का, नॉट म्यूचुअल फंड का. नेट एसेट वैल्यू. अगर मैं पूछूं व्हाट इज बुक वैल्यू पर शेयर, क्या आप कैसे फाइंड आउट करोगे? बुक वैल्यू पर शेयर कैसे फाइंड आउट करोगे? हाउ यू फाइंड आउट? मेरे पास नंबर ऑफ शेयर है ना यहाँ पे. आई हैव कितने नंबर ऑफ शेयर्स मेरे? 1 लाख, 2 लाख. बुक वैल्यू पर शेयर, टोटल इक्विटी इज सम ऑफ ऑल दिस. याद रखो कि वैल्यूएशन में ये चीज वापस आएगी, बुक वैल्यू पर शेयर. सो बुक वैल्यू इज टोटल इक्विटी. टोटल इक्विटी हो गया, या टोटल बुक वैल्यू हो गया, या टोटल नेट एसेट वैल्यू हो गया, शेयर होल्डर्स फंड हो गया, वॉट एवर इट इज, दिस डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. तो कोई भी कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर जानना इज इंपॉर्टेंट. अच्छा, ये बुक वैल्यू कंपैरिजन नहीं होते बिकॉज हर एक के नंबर ऑफ शेयर अलग होते हैं, तो देयर इज नो कंपैरिजन. ये वैल्यूएशन के टाइम काम में आता है. ये से शेयर होल्डर्स फंड्स, एवरीथिंग, प्रेफरेंस शेयर सब यूज करते हैं. जी, शेयर होल्डर्स फंड मतलब क्या? कंपनी का फंड जो तुम्हारे पास है, तुमको पैसा किस किसने दिया, कहाँ कहाँ से आया तुम्हारे पास पैसा? इक्विटी वाले ने दिया, प्रेफरेंस वाले ने दिया, और रिजर्व एंड सरप्लस मतलब जो तुमने खुद ने कमाया है, जो रेस किया है. तो ये तुमने बोला एड सिक्योरिटीज प्रीमियम, बट कैन आई से देयर इज ऑल्सो, जब बाय बैक करते हो तो प्रीमियम देते भी हो. ऐसे इधर है ना, बाय बैक करते हो गाइस, जब प्रीमियम देते भी हो ना, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम हमेशा ऐड नहीं होता है, वो सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है इन केस ऑफ buybacks, case of. Okay, so important concepts before we move on to balance sheet, P&L, cash flows. The entire topic should be on this. तुम्हारे theory shouldn't go wrong, your number shouldn't go wrong. तो आज हमने एक थोड़ा theory भी किया and हमने थोड़ा numbering भी कर दिया, so that कैसे फाइंड करते हैं इक्विटी शेयर, कैसे फाइंड करते हैं तुम्हारे OCI. This is many of you have given the wrong answer. OCI क्या होता है? So probably we learned 2 things. तो पे लिख के रखता हूँ मैं आज क्या लर्न किया. Day 1, okay, these topics that we have learned.
तुमको भी पता, बताओ मुझे क्या क्या तुमने लर्न किया, सो दैट वी विल नो क्या लर्न किया टुडे भी। नंबर ऑफ शेयर्स, करेक्ट, नंबर ऑफ शेयर्स एंड फेस वैल्यू, और what we learn today, OCI, anything else? Book value per share, how to find book value per share, and ये हो गया तुम्हारा day one learnings. Anything else? ये भूल गया, debentures, convertible and debentures. When convertible debentures are issued, कब इशू होता है? Which company issues? Startup और mature, याद रखना ये. And investors को which is preferred, direct equity or convertible debentures? Which is the preferred way of investing? अगर एट देन इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो सीओडी, कन्वर्टेबल. और फिक्स कन्वर्टेबल में एक ड्रॉबैक है, दैट इट विल हैव अ लॉक इन पीरियड. वो 2 साल तक तुमको जो भी है, जब तक कन्वर्ट नहीं होते तुमको इक्विटी शेयर्स नहीं मिलेंगे. बट ऑब्वियसली इक्विटी इन्वेस्टिंग आर डन फॉर योर लॉन्गर टर्म ओनली. हाँ, ओसीआई मतलब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, okay, called OCI. Very important concepts that you need to understand. So every day I will write. तुम भी मुझे याद करो तुमने क्या क्या सीखा, so I can write it over here. So we can judge कि जब हम वापस कभी अगर मिले फ्यूचर में तो ये सब चीज तुमको आनी चाहिए. तुम मेरे पास आओ तो रिसर्च कैसे करना ये मैं तुमको सिखाऊंगा. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टीचिंग यू फाइनेंस, क्योंकि आई गेट बोर्ड टीचिंग सेम थिंग टू एवरीवन. Okay, so I as a professor, I forget about professor because professor is not my passion. My passion was equity research. प्रोफेसर तो मैं ऐसे ही बना कि अरे आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम माय कॉर्पोरेट लाइफ, तो क्या करो, तो चलो मेरा रिसर्च थोड़ा आई सॉर्ट ऑफ शेयरिंग माय रिसर्च कि चलो किसी को फायदा हो जाए. बट देन आई रियलाइज कि यार या तो फाइनेंस का ही प्रॉब्लम है, रिसर्च तो दूर रह गया. क्या वैसे ओसीआई ये सब बेसिक चीजें शुड नो. एनआईएसएम फुल फॉर्म जब गूगल व्हाट इज एनआईएसएम फुल फॉर्म. कन्वर्टेबल फेस वैल्यू 10 नहीं होता है उदित, ये हम पे होता है, हम कितना भी ले सकते हैं. ये हम पे होता है, हम कितना भी ले सकते हैं. इट इज नेवर दैट 10. अभी था ना मारुति का तो 5 था ना, देखा तुमने, था ना, इसमें तो कितना था, 5 था, इसका तो 5 था. क्या हाँ ये रहा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, remeasured as defined benefit pension plan, fair value changes on equity investment through comprehensive income tax relating to that will not be reclassified as profit. So ये तो नहीं आता है इसमें. These are the only two comprehensive income. यहाँ पे कहा था इनकम टैक्स रिलेटेड टू, ये अलग पार्ट है, रिक्लासिफिकेशन आता है, विल नॉट बी रिक्लासिफाइड एज इनकम टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस. ज्यादा देके खुद को स्ट्रांग भी दिखा सकते हैं. फेस वैल्यू हैज नथिंग टू डू विद द मार्केट वैल्यू. उदित तुम्हारी गाड़ी है, तुमने 10 साल चलाई गाड़ी तुम्हारी, ठीक है, तुमने चलो तुमने मारुति ली 20 लाख की ग्रैंड विटारा उदित, 10 साल चलाई, उसको पूरा मॉडिफाई मॉडिफाई कर दिया, इसका मतलब यू आर वैल्यूड हायर. तुमने 10 साल पहले ली थी, उससे हाई वैल्यू होगा. यस और नो. तो वही कंसेप्ट है कि तुम फेस वैल्यू बड़ा दिखा के इट डजंट मीन दैट तुम स्ट्रांग हो. फेस वैल्यू ज्यादा दिखाओगे शेयर्स कम हो जाएंगे, वैल्यू तो उतनी रहेगी तुम्हारी जितनी है. तो वैल्यू डिपेंड्स ऑन योर मार्केट वैल्यू, नॉट ऑन द फेस वैल्यू. फेस वैल्यू 50 लाख लो ना, 100 रख लो, क्या फर्क पड़ता है. वो फेस वैल्यू का क्या कंसेप्ट है, जितना कम फेस वैल्यू उतने ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स. इट हैज नथिंग टू डू विद द मार्केट वैल्यू, का कुछ नहीं है उसका. इट हैज नथिंग टू डू विद योर बिजनेस वैल्यू. तुम्हारे पर्सनल लाइफ में या कंपनी केस में उसका कुछ भी वैल्यू नहीं होता. इट इज जस्ट जब फर्स्ट इशू किए थे तब कितने पे इशू किए थे, ऐसा.
Okay, fine. So day one, learning, and every day I will to make share करता हूँ एक drive, and drive में I will put all these things. Okay. हाँ, I will go अमित, I will share a drive link. देखता हूँ, I will create a drive link and तुमको access देता हूँ उसका, so that you cannot download this obviously, but you can always see it. Okay. Yeah. Okay, guys. Thank you. We'll meet tomorrow again at the same time. Sorry, I have to finish by 9 by any time because I have something urgent after this. Thank you so much. We'll meet again tomorrow. Thank you, guys. Thank you. Have a good night. See you tomorrow. Bye bye. Bye, guys. Thank you. Thank you so much. See you tomorrow.